हेलो एवरीवन। हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर सोशल इन्वायरमेंट और सोशल कल्चर इन्वायरमेंट के बारे में देखा था। सही है, सोशल इन्वायरमेंट और सोशल कल्चर इन्वायरमेंट ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, सेम ही बताया गई थी कंसेप्ट कि सोशल इन्वायरमेंट के साथ क्या आता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं, सही है, वहाँ पे कैसे सब रीजन के लोग एक साथ रहते हैं। सही है, तो हम क्या करते हैं, हर एक फेस्टिवल क्या करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं। सो उसके हिसाब से जैसे मार्केट के अंदर डिमांड रहती है, जिस फेस्टिवल में जैसे कपड़े पहने आते हैं, सही है, उसकी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, और उसके हिसाब से क्या होता है, मार्केट के अंदर चेंजेस हो रहता है। सही है, सो ये हमने इसके अंदर इसकी स्टडी की थी। उसके बारे में इसके बाद हम देखने वाले हैं माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। ओके, सो माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे क्या कहा गया है इसके अंदर। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि हम जब स्टडी करते हैं रिलेटेड टू द बिजनेस, क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। सही है, बहुत सारी बदलाव आते रहते हैं, जैसे हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। सही है, सो कुछ बदलाव रहते हैं, जैसे कि हमारे शेयर होल्डर, कॉम्पिटिटर, कस्टमर, गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक टाइम जो पॉलिसी चालू है, जो स्टडी चल, उसके अंदर बदलाव आ सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बदलाव आ सकते हैं, तो कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट चेंज करते हैं। सही है, तो उसकी तरह क्या करना पड़ता है हमें, जैसे कि जैसे लोगों की डिमांड, जैसे जैसे लोगों की वांट्स चेंज होती रहती है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी हम तब्दीली लाते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे की टेक्नॉलॉजी की क्या होता है, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होती रहती है टेक्नॉलॉजीमध्ये, कसं खूप वाढ होते। जसं जसं टेक्नॉलॉजीमध्ये खूप वाढ होते, त्याच पद्धतीने आपण काय सांगितलं, याच्यामध्ये तुम्ही सुद्धा काय करता, तुम्ही ह्याच्यामध्ये सुद्धा चेंजेस करत जाता। तसं पण एक्सटर्नल इन्व्हायरमेंटमध्ये काय असतात, खूप सारे चेंजेस होत असतात। मग तेच सांगितलं याच्यामध्ये की सगळ्यात भरपूर इम्पॉर्टंट जो रोल आहे, तो काय आहे, मायक्रो इन्व्हायरमेंट इन्क्लूड दोज प्लेस वॉज डिसिजन अँड ॲक्शन have direct impact on the company. These factors include the competitor, customer, distribution channel, supplier, and general public, and production selling commodities. याच्यामध्ये काय सांगितलं, सगळ्यात इम्पॉर्टंट जो रोल आहे याच्यामध्ये, जे डिसिजन ऍक्शन घेतलं जातं, त्याच्यामधून पहिले फॅक्टर आहे त्यांचे कस्टमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्युशन चॅनल, बरोबर आहे, कॉम्पिटिटर एक्सेट्रा. मग तेच सांगितलं याच्यामध्ये की सप्लायर काय सांगितलेलं आहे, सप्लायर ऑफ इनपुट, अन इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन द एक्सटर्नल मायक्रो इन्व्हायरमेंट ऑफ अ फर्म, सप्लायर ऑफ इनपुट सच एज रॉ मटेरियल and components. Normally, most firm do not depend on the single supplier ऑफ इनपुट. बघा, मोस्ट ऑफ फर्म काय करतात की प्रत्येक एक सप्लायरवरती काय डिपेंड नसतात. बरोबर आहे, त्याला माहिती आहे की मार्केटमध्ये खूप सारे चेंजेस होत राहणार आहेत, त्याच्यामुळे त्याला लागणारे जे इनपुट आहे ते खूप असतील. बरोबर आहे, मग त्याच्यामध्ये काय होतं की डिफरंट टाइप्स ऑफ सप्लायर ते सप्लायर त्यांच्याकडे असतात, जेणेकरून त्याला योग्य ते रॉ मटेरियल काय करू शकतात, प्रोव्हाइड करू शकतात. बरोबर आहे, त्यानंतर काय सांगितलं, टू रिड्यूस द रिस्क अनसर्टनिटी ऑफ बिझनेस फर्म प्रेफर टू कीप मल्टिपल सप्लायर ऑफ इनपुट. बरोबर आहे, कारण कसं, कारण जसं जसं चेंजेस इन्व्हायरमेंटमध्ये घडत जातात, त्याच पद्धतीने त्यांनी सांगितले की जसे जसे आपला रिस्क आपण जो आपल्याला पुढे सोसावं नाही लागणार, सोसावं तर लागू शकते, तर त्यासाठी आपल्याला काही अगोदरच तयार केली पाहिजे. कारण रिस्क काय आहे, अनसर्टन आहे, कधीही येऊ शकतं, धोके हे कधीही उद्भवू शकतात. माझ्यासाठी तुम्ही काय करा की अगोदरच तुम्ही तयारी करून ठेवा. तुम्ही एक सप्लायर नाही तर तुम्ही काय मल्टी सप्लायर काय करा, मार्केटमध्ये अवेलेबल करून ठेवा. ओके, नेक्स्ट सांगितलेलं आहे कस्टमर्स. आता कस्टमर म्हणजे काय, कस्टमर खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे बिझनेसमध्ये. कारण का, जसे जसे कस्टमरचे नीड्स आहेत, वॉन्ट्स आहेत, त्यापासून तुम्हाला काय केलं जातं, तुम्हाला प्रोडक्ट सप्लाय करावे लागतात. मग तुम्ही जे प्रोडक्ट सप्लाय करणार आहात मार्केटमध्ये, ते इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही कशा पद्धतीने तुम्ही सप्लाय करताय, एक्झॅक्ट कस्टमरची नीड काय आहे, नीड बघून तुम्ही काय करणार आहे, कस्टमरला ते प्रोडक्ट तुम्ही सप्लाय करणार आहे. बरोबर आहे. सो ह्याच्यामध्ये तसंच सांगितलं की द पीपल हू बाय अँड यूज ऑफ फर्म प्रोडक्ट अँड सर्व्हिसेस आर इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मायक्रो इन्व्हायरमेंट. जे प्रोडक्ट काय करतात, बाहेर एक्सटर्नल इन्व्हायरमेंट बाहेर काय केले जातात, जे कस्टमर आहेत ते काय करतात, बाय करतात. बरोबर, ते काय करतात, ते प्रोडक्ट यूज करतात. आणि मोन मेटो काय याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे, याच्यामध्ये आपल्याला की सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे की कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. जर कस्टमर तुमच्या प्रोडक्ट पासून सॅटिस्फाय नसेल, तर काय होणार, तुमचं प्रोडक्ट मार्केटमध्ये रन होणार आहे का, नाही होणार. मग ते सांगितलं याच्यामध्ये की तुमचं कस्टमर सॅटिस्फाय आहे, तुम्ही काय करू शकता, मार्केटमध्ये प्रोडक्ट तुम्ही अट्रॅक्ट करू शकता. बरोबर आहे, कस्टमर तुम्ही काय करणार, अट्रॅक्ट करणार आहात. बरोबर आहे, आणि कस्टमर काय होणार, तुम्ही त्याच्यावरती फोकस करू शकता. जसं आपण काल बघितलं होतं किंवा मार्केटिंगचे लेक्चर सुद्धा, की कस्टमर जेव्हा अट्रॅक्शन तुम्ही करणार, मग कस्टमर अट्रॅक्ट करत असताना तुम्हाला काय टार्गेट ऑडियन्स बघावी लागते, की एक्झॅक्ट तुमची टार्गेट ऑडियन्स काय आहे, टार्गेट कस्टमर काय आहे, त्यानुसार तुम्हाला काय केलं जातं, प्रोडक्ट तुम्हाला तो सेल करायला लागतो. बरोबर आहे, मग त्यानुसार कस्टमर फॅक्टर हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट आपला पॉईंट सांगितलेला आहे तो आहे डिस्ट्रीब्युटर्स. डिस्ट्रीब्युटर्स म्हणजे कोण, तर आपले मार्केट इंटरमिडिएटरीज, जे काय करतात, आपल्याला प्रोडक्ट देण्याचे काम करतात, जे प्रमोशनचे काम करतात. बरोबर आहे. इन द फॉर्म एक्सटर्नल मायक्रो एन्व्हायरमेंट, मार्केटिंग इंटरमिडिएटरीज प्ले अन इम्पॉर्टंट एसेन्शियल रोल ऑफ सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन. खूप मोठा महत्वाचा भाग आहे डिस्ट्रीब्युटरचा, कारण ते काय करतात, आपल्याला प्रोडक्टच्या प्रमोशन पासून ते प्रोडक्ट आपल्याला देण्यापर्यंत खूप महत्वाचा रोल काय करतात, प्ले करत असतात. मार्केटिंग प्रोव्हाइड अन इम्पॉर्टंट लिंक बिटवीन द बिझनेस फर्म अँड अल्टिमेट कस्टमर्स. बरोबर आहे, तेच सांगितलं त्याच्यामध्ये खूप महत्वाचं काय करतात, ते लोक आपल्याला रोल प्ले करतात, जेणेकरून आपलं प्रत्येक प्रोडक्ट काय करतात, डिस्ट्रीब्युटर आपल्याला पोहोचवतात.
नेक्स्ट आहे कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स बद्दल तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे की डिफरंट फर्म और इंडस्ट्री कॉम्पीट विथ ईच अदर ऑफ सेल द प्रोडक्ट. दिस कॉम्पिटिटर मे बी the basis of pricing of the products and also non-pricing competition of competitive advertising, sponsorship events and promote etc. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे की कॉम्पिटिटर सुद्धा काय आहे खूप इम्पॉर्टंट आहे ह्याच्यामध्ये. कारण का जेव्हा तुम्ही मार्केटमध्ये नवीन प्रोडक्ट आणता किंवा तुमचं मार्केटमध्ये प्रोडक्ट एखादा रन होतोय आणि तुम्हाला जर एखाद्याची प्रमोशन टेक्निक वेगळी असेल, त्याच्याकडे जर कस्टमर अट्रॅक्ट होत असतील तर तुम्हाला काय करायचं, तुम्हाला पण त्या रीती काय करायचं, काहीतरी स्ट्रॅटेजी तुम्ही फॉलो केली पाहिजे. बरोबर आहे. त्या रीती तुम्ही काय करणार, काही टेक्निक्स यूज करणार आहात. बरोबर आहे. आणि तुम्ही काय करणार, तुमचं सेल प्रमोट करणार आहात. सो कॉम्पिटिटर काय आहे सांगितलेला मेन मुद्दा म्हणजे की तुम्ही जे प्रोडक्ट सेल करणार आहात, हे प्रोडक्ट सेल करत असताना तुम्हाला कॉम्पिटिटर्स जे काय फॉलो करते तेच सेम फॉलो न करता तुम्हाला तुमची स्ट्रॅटेजी तयार करायची आहे. तुमच्या स्ट्रॅटेजीनुसार तुम्हाला काय करायचं, तुमचं प्रोडक्ट सेल करायचं आहे. इफ द कॉम्पिटिटरने असं केलं की त्याच्याकडे असं प्रोडक्ट आहे जो तुमच्याकडे सुद्धा आहे, पण त्यासाठी त्याची एस्टिमेटेड कॉस्ट ही खूप कमी लागलेली आहे आणि तो सेल करतोय खूप कमी प्राइसमध्ये, तर तुम्ही मग करणार आहात का ते प्रोडक्ट सेल त्या कमी प्राइसला? नाही. पण तुमची टेक्निक, तुमची जे स्ट्रॅटेजी असेल, तुम्ही ती स्ट्रॅटेजी म्हणून तुम्हाला काय करायचं, तो प्रोडक्ट मार्केटला सेल आउट करायचा आहे. मग हे त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे की कॉम्पिटिटरची स्ट्रॅटेजी आपल्याला रीड करून एनालाइज करायचे मार्केट. जेव्हा तुम्ही मार्केट एनालाइज कराल तेव्हा तुमच्या लक्षात येणार आहे की ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कोणत्या रीती काय काम करायचं आहे. ओके. सो नेक्स्ट आहे एक्सटर्नल मायक्रो एन्व्हायरमेंटच्या अंडर सोशल इन्व्हायरमेंट अँड सोशल कल्चर इन्व्हायरमेंट. आता आपण कालच्या लेक्चरला सुद्धा पण ह्याची स्टडी केलेली होती. बरोबर आहे. हे सोशल इन्व्हायरमेंट मध्ये कोणते फॅक्टर येतात आणि सोशल कल्चर इन्व्हायरमेंट मध्ये कोणते फॅक्टर येतात. सो सोशल कल्चर इन्व्हायरमेंट, सोशल इन्व्हायरमेंट याच्यामध्ये काय खूप चेंज नाही, सेमच आहे. फक्त एवढं सांगितलेलं आहे की सोशल अँड सोशल कल्चर इन्व्हायरमेंट also influence the business environment indirectly. These include the people attitude to work and well ethical issue, role of family, marriage, religion and education, and also social responsiveness of business. The social and cultural environment also the demand of the variety of goods and type of employee industry require. Moreover, the obligation of business society also depend on the cultural which of the form of operating. So social cultural environment मध्ये आपल्याला काय सांगितलं याच्यामध्ये, तुम्हाला ह्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, की तुमचं सोशल कल्चर एन्व्हायरमेंट जर व्यवस्थित असेल, बरोबर आहे, जर पॉझिटिव्हिटी असेल, तर तुम्ही काय करू शकता, सगळ्यांना एकत्र घेऊन तुम्ही काम करू शकता. बरोबर आहे. समजा तुमचं सोशल एन्व्हायरमेंट जर बरोबर नसेल, तुमच्या संगती लोक जसे बोलतो तुम्हाला की जर तुम्ही कॉन्फ्लिक्ट निर्माण करत असाल तर तुमचं काय होऊ शकतं, कामामध्ये अडथळे येऊ शकतात. बरोबर आहे. किंवा तुम्ही एकत्र राहू शकत नाही. मग हे सांगितलं याच्यामध्ये की जेव्हा तुम्ही सोशल कल्चर एन्व्हायरमेंट, तुमचा कामाचा जो परिसर चांगला राहणार आहे, तुम्ही लोकांकडे चांगले राहणार आहात, तुमचं काय होऊ शकतं, तिथलं जे बिझनेसचं काय बिझनेस तुमचा अजून आणखीन वाढू शकतो. आणि त्या सांगितले काही सांगितलं त्यांनी की जेव्हा तुमचं सोशल कल्चर एन्व्हायरमेंट पॉझिटिव्हिटी असेल तर त्यांच्यामध्ये फॅमिली, मॅरेज, रिलीजन, एज्युकेशन ह्याच्यावरती काय समजा चांगला इम्पॅक्ट पडणार आहे. म्हणजेच काय बघा, आपण जेव्हा लग्न करतो, आपण ज्या समाजामध्ये राहतो तिथे खूप सारे कास्टचे लोक राहतात. बरोबर आहे. खूप सारे धर्माचे लोक राहतात. मग त्यांना आपण काय करतो, एकत्र घेऊन काय करतो, आपण प्रत्येक आपला प्रोग्राम करतो, प्रत्येक फेस्टिवल आपण काय करतो, सेलिब्रेट करतो. तर तेच सांगितलं त्याच्यामध्ये, तुम्ही ज्या तऱ्हेने राहणार आहात, ज्या तऱ्हेने तुमचं पॉझिटिव्हिटी असणार आहे, त्यानुसार तुम्ही काय करणार आहे, त्या लोकांना एकत्र घेऊन तुम्ही ते इन्व्हायरमेंट तयार करणार आहात आणि ते इन्व्हायरमेंट तुमचं कसं असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे. ओके. मग हे त्याच्यामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट बघणार आहोत आपण ह्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे आपल्याला. Okay, so today's topic is technological environment. Everyone knows about the technology. Okay, so let's see. So technological environment. Technological is a systematic application of scientific knowledge of practical tasks affect of all types of business. It is basic components can be make the business successful or even destroy. It is a rapid development of technological require quick relationship businesses in order to survive in emerging competitive environment and keep up the new trend in the market. So after the individual revolution of the information has been a major significant development in this country. Some of the development in the information technology were innovation of the microprocessor, personal computer, evaluation of the software, and the rapid advances in the field of telecommunication. Okay, so banking sector one such that uses informations and technological to handle the volume business with the desired level of efficiency, and technological advancement has made of banking very easy, time to time effective, and the internet banking is the most common thing in our banks. Let's see the technological environment. First of all, हम जब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो ख्याल आता है वो आता है जापान के बारे में. क्यों? क्योंकि जापान इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलप्ड कंट्री.
क्यों? जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है और उनके 5 साल पहले उनके पास टेक्नोलॉजी थी, मतलब अब हमें हम उसके बारे में अगर यहाँ पे थिंक करते हैं तो टेक्नोलॉजी क्या होती है, वहाँ पे वो बना चुके होते हैं। मतलब क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए वहाँ पे आज हम जो वॉचेस यूज कर रहे हैं, जो स्मार्ट वॉचेस है, स्मार्ट हार्ट बीट, जो हम हमारा हार्ट बीट बताता है, जो ईसीजी बताता है, वो उनके पास बहुत पहले से ही था। ठीक है, और अब हम हमारी जैसे कि हम बात करें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में, तो उसके अंदर देखिए सबसे पहले ये पार्ट स्टडी के अंदर क्यों आया, मतलब हमारे क्वेश्चन में क्यों है। देखिए हम स्टडी करें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, अगर हम अपग्रेड नहीं होंगे टेक्नोलॉजी के बारे में तो उसका ज्यादा इफेक्ट जो होगा, जैसे कि हम इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी के ऊपर बात करें तो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट काय पे होगा, हमारे बिजनेस के ऊपर होगा। अगर हम इनोवेट नहीं किए, हमारी टेक्नोलॉजी हमने इनोवेट नहीं की, चेंजेस उसके अंदर नहीं लाई, तब्दीलियां नहीं की, तो क्या हो सकता है, हमें सबसे ज्यादा इसके अंदर हमें क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो हमें जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट और जैसा टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है उसके हिसाब से क्या होना है, हमें भी चेंज होना है, उसके अंदर हमें चेंजेस लाने हैं। Okay, so the changing technological has helped the international banks to not only exercise the proper control over cost but also expand their business and handle the large number of clients. Bank today have become a center for collection, storage, and processing of the information, gathering the accounting and the books of keeping efficiency and branches by computerizing back office and operations. Okay, so full branch of computerization has setting up to automatic teller machine have enabled the private banks to improve the quality of business, the retail, and the segment. So main part of the technological environment consists of the factor like first research and development. So research and development. If you are not research about the new innovative, you can be handle it of you can survive in technological world. So technological research people through business. देखिए टेक्नोलॉजिकल में रिसर्च और डेवलपमेंट की बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। अगर हम नए अगर नए टेक्नोलॉजिकल हमने इन्वेंट किए, उसके ऊपर हमने पता चले कि कौन सी टेक्नोलॉजी का कस्टमर तक पहुंचना जरूरी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो टेक्नोलॉजी हाउ टू रीच द पीपल थ्रू बिजनेस, कैसे उन तक हम पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए कि मोबाइल के अंदर भी न्यू टेक्नोलॉजी क्या है कि आपका फेस स्कैन होता है, तो उसके बहुत सारे ऐड भी टीवी में आते हैं। ठीक है, तो उसी बारे में कि क्या करेंगे, हम रिसर्च करेंगे कस्टमर के लिए, जैसा ट्रेंड चेंज हो रहा है उसी हिसाब से क्या करेंगे, हम रिसर्च करेंगे और प्रोडक्ट क्या होगा, हम उसके ऊपर उसको डेवलप कर सकते हैं और उसको डेवलपमेंट में ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज इनोवेशन। अब इनोवेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनोवेशन हर हर टाइम इनोवेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि ओल्ड टेक्नोलॉजी चल रही है। ठीक है, इनोवेशन अभी हर जगह हो रहे हैं। मतलब क्या कि अगर कोई पुरानी टेक्नोलॉजी है, पहले कैसा था कि जो जो लोग थे मोबाइल यूज करते थे सिंपल, जिसके अंदर ना कैमरा होता था ना और ना कुछ फीचर्स होते थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी क्या हुई, इनोवेट हुई, उसके अंदर कैमरा आ गया तो कैमरे का यूज कम हो गया। ठीक है, मतलब इनोवेशन होना भी बहुत जरूरी है और उसी हिसाब से हमें हमारे टेक्नोलॉजी का में इनोवेट करना जरूरी है। अगर हमने वही पुराना मॉडल हम बेच रहे हैं मोबाइल का, तो सेल हो पाएगा क्या, नहीं। जो फीचर्स आ रहे हैं उसी हिसाब से हमें क्या करना है, इनोवेट भी करना है हमारा मोबाइल, और हमें उसे उसी तरह सेल भी करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या कि अभी का जो ट्रेंड चालू है, कौन सा ट्रेंड चालू है कि अगर हम जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आप अगर आपके मोबाइल के अंदर सिर्फ अगर एक कैमरा रहेगा जो 16 मेगापिक्सल है और आप उसको सेल करेंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन बाकी के मोबाइल क्या करें, अभी हर एक मतलब वाइड एंगल कैमरा डिफरेंट, उसी हिसाब से क्या करें, अपना मोबाइल मॉडर्नाइज करें। देखिए नोकिया की एक स्ट्रेटेजी थी, नोकिया ने क्या किया, विंडोज फोन में अपने डाला, उनको क्या लगा कि विंडोज डालेगा एंड्रॉइड से अच्छा हमारा फोन सबसे ज्यादा हम बेच सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, सबसे ज्यादा जो सेल था वो काय का हुआ, एंड्रॉइड मोबाइल का हुआ, उसका ट्रेंड ज्यादा चला। ठीक है, तो उसी हिसाब से उन्होंने क्या किया, फिर नोकिया ने फिर वो स्टॉप किया वहां पे और फिर से क्या किया, चेंज किया उसके अंदर, और अपना मोबाइल वो लोग सेल कर रहे हैं। मतलब क्या कि उन्होंने मॉडर्नाइज नहीं किया कि कौन से इस मॉडर्न टेक्निक के लिए कौन सी जरूरतें हैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। सो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों, क्योंकि हम सोशल प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी मतलब क्या कि हमें सोशल चेंज के उस हिसाब से भी देखना होगा कि इन्वायरमेंट में कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए जैसे कि अभी सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी सर्विलियंस, ये क्या होता है, सोशल ट्रेंड के अंदर बहुत इफेक्टिव होता है। अगर हमारे आसपास भी कहाँ चोरी हुई है, हमारे चोरी, तो क्या होता है, पता चल जाता है, हम चोरी को जो थ्रेड्स हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है, हम इजीली उसको स्कैन कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से क्या है, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम अब जब चाहे किसी से भी कहीं बात कर सकते हैं। ठीक है, इनोवेशन होने के कारण। सो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर।
ठीक है. So next point is legal environment. So legal environment means the legal environment refer to all the legal surrounding that affect organization activities. It consists of area of the rules of regulations and protection of institutions and process. The legal environment of business consists of laws and that regulate the conduct of the business. Some of the important legislation so business has considered as follows. देखिए लीगल इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले मैंने कहा था कि लीगल इन्वायरमेंट मतलब ऐसा कि आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको जो लॉ है उसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि लेजिस्लेशन जो आपके जो लॉ बने हुए हैं उसे आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, सही है. तो उसके जैसे कि हम बात करें लीगल इन्वायरमेंट के बारे में ही अभी, तो लीगल इन्वायरमेंट मतलब क्या है कि जो लॉज बने हुए हैं उसको हम फॉलो करते हैं, सही है. उसके अंदर पहला पॉइंट है फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, रेगुलेशन एंड कोर्ट डिसीजन. देखिए जो लॉ बने हुए हैं उसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है. अगर हमने फॉलो नहीं किया तो क्या होता है, हमें सजा मिल सकती है. एक कौन डिसाइड करता है, कोर्ट डिसाइड करता है इसके अंदर, ठीक है. जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी आपको बताया था कि अगर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि प्लास्टिक बैग्स आर बैन, तो क्या हो सकता है, वो आपको बंद ही करनी होगी, उसको आप चालू नहीं रख सकते हैं, ठीक है. अगर आपने उसको चालू रखी तो क्या हो सकता है, आपको सजा मिल सकती है, ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज एडुकेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. देखिए आपको नॉलेज का होना बहुत ही जरूरी है, रूल्स रेगुलेशन ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, हर वक्त कोई आपको लॉ पढ़ाते नहीं बैठेगा, क्यों? क्योंकि नॉट नोइंग द लॉ इज नॉट योर अन एक्सक्यूज. अगर आपको लॉ पता नहीं तो आपको आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते. अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं और आपने अगर टिकट नहीं निकाली तो क्या हो सकता है, आपने क्या किया, रूल से रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, तो बाय लॉ तो क्या हो सकती है, सजा हो सकती है. तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नॉट नोइंग द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. इसके अंदर आपको कोई एक्सक्यूज बता के नहीं चलने वाला, ठीक है. वेरी मच कॉमन सेंस, कॉमन सेंस थिंग, कॉमन सेंस की बात है कि आपको कहीं जाना है, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको टिकट निकालना है, ठीक है. हर वक्त जो लॉ है, मतलब जो लॉ है आपको हर वक्त कोई बता नहीं पाएगा कि ऐसे ऐसे करना है, या इस तरह अगर आपने लॉ फॉलो नहीं किया तो आपको सजा हो सकती है, या आपको पता होना चाहिए. यही आता है लीगल इन्वायरमेंट के अंदर कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं उसी हिसाब से आपको क्या करना है, फॉलो. सो नेक्स्ट पॉइंट, consumer law. See, they are designed to protect the consumer against substandard and the product that marketing of certain other product in many countries. Promotional activities are subject to various types of control. Example, India advertise of alcohol is prohibited. Similarly, the packing of the cigarette must be contained. Statutory warning of the cigarette smoking is injurious of health. Moreover, the product like drugs, cosmetic, food, and additives should contain full disclosure about the concept. The price is batch number, manufacturing date of expiry date, etc. Also, selling of guns, explosive, and dangerous drugs are illegal of many countries. So, most important part in the consumer law, the consumer we use the product information written on the packet to be aware first. So next point, weighted and measure act. So goods sold should not be underwrite standard and the weighting equipment should be used to measure goods. The most important part in the goods is the equipment of the equal to the all act in the parties. So next thing, trade descriptions act. So trade description act, the giving the misleading impression about the product and illegal. The giving the all information about the trade description in act. So next point, Consumers Credit Act. So Consumers Credit Act, according to this act, consumer should be given a copy of the credit agreement and should be aware of the interest rate, length, and loan when taking the loan. Okay. So next part is employee protection law. So employee protection law, government has also passed law to protect the interest employee against unfair discriminations at work and the while applying for the job so that there are no unfair of discrimination on the basis of race, religion, sex, age, and color. So main part of the employees protection law to protect worker from dangerous machinery, taking the safety, taking some insurance. So next part, worker should be provided with the proper safety equipment and clothing. They giving the clothing. If you are using the hard machinery, they giving the gloves and all. Okay. So next part, a reasonable work to temperature is maintained for the workers. After that, the proper hygienic condition and washing facility are provided. If you are
If you are working in a color company, they are giving the all types of clothes and hand gloves and giving the, some water to use your clean your hand and hand etc. So after that, the worker get educate breaks between the shifts. They're giving the shift wise work. They're not giving the work uh, work at same way or same time. They taking your shift to 8 hours, 9 hours. Okay. So after that, the next point is competitions of law. The business practices of market trades that the governments have and always been the subject to security. The main aim of the competition laws of maintain fair competition is market avoided of monopolistic tenders. The Monopoly Relaxtive Trade Practices Act recently ambassadors called Competitions Act of India has enhanced in 2002. The result is India's pressure of globalization and liberalizations of the economy. Some important points of the giving the impact of direct in competition of law of the in legal factors. So first is adoption of apologies of pricing policies. After that, the emphasis of the employee safety. Next point is avoid is monopolistic on competitions. And after that, the protection of the environment and the social welfare. Okay. So next point, ecological environment. See the ecological environment, there are many ways of a business can reduce the negative effect of their operation and work with the stakeholder to promote more environmental friendlier practices to minimize the damage to the environment. Business must consider the following activities. The some activities are very important in the ecological environment. So reduce carbon emissions means carbon sending in air. So this temperature in less. So produce or use of lead to the free force of the other greener sources of energy, incorporating cleaner production method in new business and the buildings plants etc. To improve industry recycle program, encouraging the encourage the energy of management schemes, offer free long life and shopping banks of other biosensitive package of products, and ask for the staff or the new ideas for the getting the new innovations techniques. After that, they donate the money from environmental projects that directly affect their stakeholders, and the providing recycle facility, providing tree planting and the urban regeneration schemes are providing in ecological environment. Mostly of see if you are giving the any company of any firm, there is a more of tree. आपने देखा रहेगा कि आप कहाँ पे बहुत जहाँ 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 गए क्या होता है कि शहर से बाहर होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसके आजू बाजू क्या होते हैं ट्रीज प्लांटेशन वगैरह वो लोग करते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज पेस्टल एनालिसिस. So what is meant by the pestle analysis? In other words, other detail analyze the microenvironment of the environment as a whole called as pestle analysis. So pestle analysis ascertain that they manage the strategy buildings to where the currently stand and the where will produce in the future. So give the differential between the present company and the situation of the futures competitions. So in pestle analysis comes first P, political environment. So what is meant by the P in pestle analysis? Political environment, political factor. So political factor, this factor take into account the political situation of a country and the world in the relative to the country, all policies, taxes, laws, and every tariff that the government leaves of trade fall under this category of factor. So after that, the political factors come economic. E means economical factor. So economical factor in economical factors include or determines of the economical and its conditions, the inflation rate, interest rates, and the monetary physical policies, the foreign exchange rates that affect the import and export of these determine the direction of which economic and the economy and the migrant move. Therefore, the business analyze their factor of the environmental so as formulate strategy. See the economical factor. आपने अपने लास्ट पॉइंट में भी देखा कि इकोनॉमिकल फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है. इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या पे होता है हमारी इन्वायरमेंट क्या देखा. इंटरेस्ट रेट अगर कम ज्यादा होते हैं तो फॉरेन करेंसीज अप एंड डाउन, जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट के अंदर देखा था. So same in connect with the economical factors. So next point is in pestle environment. PES. Yes means social factor. So what is meant by social factor? Every country is a different and every country has a unique
mindset. This mindset casts an impact of the business and the sales their produce and the services. The influence experience of the social culture factor that are not within the control of the business can be interest of the failure, the cultural implications and the general so demographics and the social lifestyle and domestic structure, all of this the studied by the companies to understand the market and the consumer is better. जैसे कि मैंने कहा था कि सोशल फैक्टर के अंदर कि क्या होता है इसके अंदर कि आप अगर कहीं दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ पे क्या होगा ट्रेडिशनल अलग होगा हर जगह का हर एक कंट्री में ट्रेडिशन अलग होता है अगर जहाँ पे वेस्टर्न चल रहा है वहाँ पे आप ट्रेडिशनल कपड़े नहीं यूज कर सकते और जहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़े ज्यादा यूज होते हैं वहाँ पे आप क्या कर सकते वेस्टर्न आप वहाँ पे जाके सेल नहीं कर सकते या उसी हिसाब से आप ज्यादा घूम नहीं सकते क्योंकि वो कुछ अलग दिखता है तो उसके अंदर ये बताया गया है आपको कि सोशल फैक्टर्स के अंदर ऐसा होता है कि अगर हमने सोशल फैक्टर मतलब सोसाइटी के हिसाब से हमने हमारी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की तो क्या होता है उसके ऊपर हमारा इफेक्ट इफेक्ट गिरता है ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट इज technological factor. So technological is greatly influence a business it change every minute in the therefore companies need to stay connected to integrate and ads when needed. The rapid development technology require quickly reaction by the consumer in order survive in an emerging competitive environment and keep the new trend in the market. So also these factors are analyzed to understand follow the consumers, react technological trends and how they utilize for the benefit. ठीक है मैंने पहले ही कहा था कि टेक्नोलॉजी क्या है हर दिन कुछ नई आती है उसके ना इनोवेट होती रहती है सो एवरी मिनट सम टेक्नोलॉजी चेंजेस हर एक मिनट की टेक्नोलॉजी क्या रहती है बदलती रहती है उसी हिसाब से क्या करना रहता है हमें हमें भी उसी हिसाब से क्या करना है बदलना पड़ता है इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या करना है हमें बदलना पड़ता है नए इनोवेशन लाने पड़ते हैं तो ये बताया गया है टेक्नोलॉजी फैक्टर के अंदर ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल फैक्टर जैसे कि अभी बाद में देखा था कि जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ती है लीगल फैक्टर के अंदर वही बताया गया इसके अंदर भी कि legislative changes occur from time to time and the effect of business environmental for example is regulatory body would be set up the regulations for the industry then that would be impact of industry and the business and steps and the economical therefore business also analyze the legal development helping the environment so next point is environmental factor. So what is the environmental factor? The location of countries, influence of the trades and the business, the climate changes, alter of the trade of industrial, of the ways of consumer react of towards certain offering that the launch in the market. The environment factor include geographical locations, climate, weather, and other such factors that are not limited climate and condition there are many ways the business can be reduced of negative effect of therefore operations and work with stakeholder to promote more environmentally friendly practices. The importance of each of the factor may be different to different kindly industries, but is not impressive of any strategy. Company wants to develop their conduct. The pest analysis is from the fundamental tool of the market planning. Strategizing the must be carried out of comprehended market trends and systematic risks is involved. In pestle analysis, give the overview of the wood situation of the every business conditions. So this call as a pestle. So next पॉइंट शॉर्ट एनालिसिस ठीक है शॉर्ट एनालिसिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मतलब क्या कि शॉर्ट एनालिसिस यानी हमारी स्ट्रेंथ हमारी वीकनेसेस हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे थ्रेड्स कौन से आने वाले हैं ये इसके अंदर हमें पता चलता है ठीक है शॉर्ट एनालिसिस मतलब शॉर्ट एनालाइज इज अ फंडामेंटल स्टेप इन अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट it is a systematic approach to understand the environment influencing the business sort is the acronym strength weaknesses, opportunities, and threats. So, SWOT analysis is used at the regular intervals. It enables the managers to achieve the performance with is the applied at the generate suitable alternatives. This approach provides a systematic analysis of the internal strength and weaknesses of business firm, along with the external opportunities and threats. Short analysis provide a good overview of whether at overall situation in healthy uncertainty, and short analysis provide the basis of preparing strength and strategy that makes to optimum use of resources the aims of capturing the firm's best opportunities and defense against the threats and the threats of the business.
देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बताया गया है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से क्या होता है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे सामने रहती है, वीकनेस हमारे सामने रहती है। मतलब कि इसको दो पार्ट में कन्वर्ट किया गया है। मतलब क्या इंटरनल पार्ट के अंदर आता है हमारा शॉर्ट एनालाइज, उसके अंदर है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ये है हमारा इंटरनल फैक्टर। सो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आता है हमारा, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे शॉर्ट एनालाइज के अंदर कि सबसे पहले है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी क्या, कि हमारा ब्रांड कितना स्ट्रांग है मार्केट के अंदर, ये क्या होगी हमारी स्ट्रेंथ होगी, सही है। और हम कितने लॉयल है हमारे हम ब्रांड के साथ, ठीक है, यह हमारा स्ट्रेंथ के अंदर आता है। उसके बाद है वीकनेसेस। वीकनेसेस के अंदर क्या होता है कि उसका टर्नओवर कितना है, उसके डेटर्स क्या है, उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितना कितना है, उसका स्ट्रांग है वीक है, ये आता है हमारी वीकनेसेस के अंदर। मतलब ये क्या हुए हमारे इंटरनल पार्ट्स हुए, इंटरनल इन्वायरमेंट्स के कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कैसी है। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटीज। अभी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर पार्ट। अपॉर्चुनिटी तो हमें बाहर मिलते हैं, हम हमारा जो टारगेट है हम बाहर कवर कर सकते हैं, ना कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर। मतलब क्या, हमने जो टारगेट बनाए हम कहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बाहर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। बिजनेस बिजनेस कहाँ पे होता है, बाहर करेंगे, सही है। सो मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटीज कैसे आ रहे हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है थ्रेड्स। थ्रेड्स यानी क्या, हमारे जो भाई कहते हैं ना हम धोखे हैं, डेंजर्स, कि हमें आगे जाके कौन से थ्रेड्स आगे मिलने वाले हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स और नया कौन सा इनोवेट करके प्रोडक्ट हमारे सामने लाएंगे जो हम जो वही सेम बेच रहे फीचर्स के साथ, ठीक है। या कोई फ्लड आ सकता है क्या, मतलब जो भी हमारा आगे जाके नुकसान होगा वो हम देखेंगे कि थ्रेड्स के अंदर कि क्या होता है। यही है हमारा शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है। अब हम सो इंटरनल इन्वायरमेंट्स कम आफ्टर दैट, जस्ट स्ट्रेंथ, यस एंड स्ट्रेंथ। जैसे कि मैंने बताया कि दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब जैसे कि मैंने बताया कि हमारा ब्रांड कितना स्ट्रांग है, ठीक है, हम दूसरों से कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर आता है हमारे अचीवमेंट्स क्या है। अचीवमेंट्स यानी ISO सर्टिफाइड। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट के ऊपर क्या होती है, कस्टमर की पॉजिटिव इमेज तैयार हो जाती है। उसके बाद में एडवांटेजेस, जैसा कि एडवांटेज क्या आएगा इसके अंदर स्ट्रेंथ के अंदर, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मतलब वो कहाँ तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कस्टमर से गुड हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। मतलब हम हर जगह हमारा प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये आएगा स्ट्रेंथ के अंदर। सो स्ट्रेंथ are the sometimes of company is a good doing and improve our ability to complete strength and enable the companies to gain strategic advantage. It help to internal environment in analyze terms of its resources of the behavior. Strengths are indicated by human resources, financial marketing resources, company. Strength of the marketing organization would include result-oriented managers, effective and campaign, adequate marketing budget, product improvement, modification, and innovation of sound of brand image, etc. It's called strength. So the next point is come weaknesses. So what is mean by weaknesses first? Weaknesses के अंदर क्या कहा था मैंने बाद में, कि हमारा हमारा जो प्रोडक्ट है उसके डेटर्स कितने हैं, सही है। उसके बाद में मैंने क्या कहा था, सप्लाई चेन कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, ये इसके आएगा वीकनेसेस के अंदर। और क्या आता है कि हम हमारे जो वीकनेसेस है उसके अंदर, जैसे कि मैं बताया कि हमारा प्रोडक्ट हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं क्या, अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा। एक एग्जांपल लीजिए आइडिया का, फिलहाल आइडिया की रेंज कितनी बहुत वीक है, तो ये क्या हो गया उनका वीकनेस हो गया। तो उसके ऊपर अगर काम करेंगे और उसका जो सिग्नल स्ट्रॉन्ग करेंगे तो क्या बनेगा, उसका स्ट्रेंथ बनेगा कंपनी का, ठीक है। तो ये आता है वीकनेसेस के अंदर। सो वीकनेसेस आर competitive deficiency. It is a some types of company falls short it comparison to is a controllable premises. Weaknesses decrease the which create strategic disadvantage. It related to competitors strengths weaknesses from basis and internal appraisal. Common weaknesses would be include higher than competitive brands presence, not result oriented of managers, limited marketing research, poor public image and financial position and outdated of technology etc. जैसे कि मैंने बाद में कहा था कि अगर हमारा वीकनेस प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद नहीं आएगा, ठीक है, पोर रिस्पॉन्स रहेगा, तो हमको क्या करना है, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। अगर वीकनेसेस ऐसे चलती रहेगी तो क्या कर सकता है, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, आगे जाके बंद हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज कम इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटीज। अभी अपॉर्चुनिटीज क्या है कि बिजनेस के अंदर अब मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या कौन से अपॉर्चुनिटीज है कि हम उसको कवर कर सकते हैं। जैसा कि कोई नया प्रोडक्ट आया मार्केट के अंदर तो हम क्या करते हैं, उसकी एडवर्टाइज करते हैं,
ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम बेच सके। अगर कोई कहाँ पे इवेंट चालू है तो हम वहाँ पे प्रोडक्ट क्या करते हैं, हम उस प्रोडक्ट की जगह वहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है, प्रमोट करते हैं वो प्रोडक्ट उस इवेंट्स के अंदर। सो हमें वो अपॉर्चुनिटीज क्या करना है, हासिल करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, हमारे प्रोडक्ट सेल कर सके बिजनेस के अंदर, सही है। सो अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या था कि अपॉर्चुनिटीज आर द एक्सटेंडर टू द बिजनेस, दे आर द पासिंग फेज इन द बिजनेस डज टू टेक एडवांटेज ऑफ uncontrollable presence. Favorite opportunities enable company to consider the strength is position opportunities would be include tax holidays and competitive market become technological innovation, ability to easy bank loan, etc. Okay, so the next part, so next point is trades. ट्रेड्स मतलब क्या होता है कि हमारे जो कौन से आगे जाके हमें धोखे मिल सकते हैं बिजनेस के अंदर, हमारे कॉम्पिटिटर्स, सही है। उसके बाद फ्लड, थेप्स, जो भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर होता है, जो हमें हमारा टारगेट करने से रोके, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेड्स कहते हैं, सही है। सो थ्रेड्स आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस, देयर इज हार्डली एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेड्स, इट इज unfavorable condition in the organization environment. A company that is not is not competent to handle risks face threats. Managers can visualize that threats exist, but there is very little one to save the business from the threats. Threats include unethical competitors, aggressive and militant trade unions, advise government policies, change in consumer behavior, etc. So threats are come in external factors, right? So अब मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो आता है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अंदर, सो मैं एग्जांपल दूंगा आईफोन का। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, बहुत बड़ी है। ब्रांड वैल्यू कितनी है, बहुत बड़ी है। प्रोडक्ट बहुत ही स्ट्रांग है, सही है। ये क्या हो गया, उसका स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। उसके बाद वीकनेस, अभी उनकी वीकनेस क्या है, ब्रांड वैल्यू बड़ी होने के कारण उनका जो वो लोग सेल कर रहे हैं उसका प्राइस भी कितना है, बहुत ज्यादा है। मतलब हर कोई क्या अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब बाकी की उनको क्या वीकनेस है, लेकिन उन्होंने अपनी वीकनेस कैसी स्टेट में तब्दील की देखी है। उन्होंने क्या किया, जहाँ पे आईफोन एस 10 प्लस प्रो जहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया, उसके साथ अभी उन्होंने क्या लॉन्च किया, एसी लॉन्च किया। मतलब क्या कि बाकी की जो कंपनी है जो उसके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, तो उसी रेंज में उन्होंने और एक फोन लॉन्च किया। मतलब उनकी ब्रांड वैल्यू कम नहीं की उन्होंने, ब्रांड वैल्यू सेम ही रखी, लेकिन उसके साथ दूसरा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया कि आपने वो वीकनेस को क्या करें, अपने स्ट्रेंथ में तब्दील कर सके, सही है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने अपॉर्चुनिटी सारी बहुत सारे गेन किए, जैसे कि मैंने बताया कि बाकी के प्रोडक्ट के साथ उन्होंने क्या किया, कि अपना दूसरा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसको क्या किया, अपॉर्चुनिटीज में तब्दील किया। मतलब क्या, बाकी के भी कस्टमर क्या हो, अपने यहाँ अट्रैक्ट हो, इजीली वो सेल कर सके वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया। उसके बाद जब भी नया उसका कोई प्रोडक्ट आता है, वो लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, हर एक कस्टमर तक वो कैसा प्रोडक्ट पहुंचता है, उसकी ब्रांड वैल्यू बड़ी होने के कारण कैसा है, अगर हर एक कस्टमर सेटिस्फाई है उसको यूज करके, ठीक है। सो नेक्स्ट इज थ्रेट्स। इसके अंदर धोखे क्या आ सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि कॉम्पिटिशंस बढ़ गए, तो उन्होंने क्या किया, बाकी के कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं कि आईफोन के मुकाबले वही फीचर्स देके उन लोग क्या करें, दूसरा फोन लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आईफोन एक हद तक ही अपने प्राइस क्या कर सकता है, कम कर सकता है। जैसे कि अभी नाउडेज चालू किया, उन्होंने 5000 लेस कर दिया, उसके नीचे वो अपना ब्रांड वैल्यू कम नहीं कर सकते। मतलब उनके लिए वो धोखा निर्माण हो सकता है, ब्रांड वैल्यू ये मतलब इमेज कम हो सकती है उनकी। तो बाकी के मोबाइल क्या करते हैं, कम से कम रेंज में अच्छे फीचर्स देते हैं, तो इनके लिए धोखा है। लेकिन वो उसके ऊपर काम करके अपना क्या करते हैं, पूरा स्ट्रेंथ बना लेते हैं, ठीक है।